Okay, we will start our lecture in 2 minutes. Okay. So yes, good evening all. Uh, today we will continue. Today we will continue with our current affair discussion. Uh, uh, so for first 1 hour, we will talk about. We will see the news of current affairs. Good evening all. Then we will be talking about some factual data or some general awareness information from which is important from exam point of view. Okay. So we will let us wait for another 2 minutes. The people are joining. Okay. So we will continue. Okay. So almost 75 students are there. So we will start our lecture. As I mentioned earlier, we will continue with current affair magazine, and after 1 hour, for 1 hour, we will continue with magazine, and after 1 hour, I will be uh, giving you some important information regarding defense exercises, and you can expect one question from defense exercise, and after that, I will be talking about some uh, important tribes in India and the world. So this particular information, defense exercise and world, important tribes from India and world, it is beneficial for both banking and staff selection students. Okay, both can expect one each, 2 or 3 questions on these topics. Okay, so let us start with magazine. I hope everyone is clear with clear with the information that we are sharing or that we are talking about when it comes to current affairs magazine. So in last lecture we talked about current of daily important days and agreements. Now we will take 3 to 4 topics on the basis of exam.
Okay. So we have appointments also. Let us continue with appointment. I will so this type of question can be asked from appointment. That is PSU or PSP head, private companies, national and international organization, MD and CEO, Indians appointed on important position of international company or organization. For example, कल बताया था कि ट्विटर के जो सीईओ है पराग अग्रवाल वगैरह, ये आपको डायरेक्ट सवाल वैसे पूछ सकते हैं. ठीक है. IS Praveen Kumar named as DG and CEO of Indian Institute of Corporate Affairs. So this can be a one-liner question. There is no other information is required from your side to add this. Uh, what we can add, yes, you can always look for headquarter of Indian Institute of Corporate Affairs. So, Indian Institute of Corporate Affairs, it is headquartered in Manesar, Haryana. It established in 2008. Headquarter Manesar in Haryana. Indian Institute of Corporate Affairs. Established in 2008, Manesar, Haryana. So this can be basic question. What is news that IS Praveen Kumar is appointed as DG and CEO, that is Director General and Chief Executive Officer of this institute. And this institute comes under Ministry of Corporate Affairs. ठीक है. So this can be a question. Next. A minute. Am I audible now? आवाज आ रहा है मेरा अभी? Clear? Okay. Yes. Okay. So next, diplomat Vikram Misri named as a Deputy National Security Advisor. So this can be another question. Vikram Misri, who is currently who is recently named as Deputy National Security Advisor. Basically, National Security Advisor is a uh, position that was created after Kargil war, basically, and currently National Security Advisor is. Um, I will it is your homework. Find out the current National Security Advisor. Who is that is your homework. ठीक है? Who is National Security Advisor? If you know, please mention. If you don't know, please find. This is the your question. If you know, please mention his or her name. ठीक है? And that can be this can be direct question. Who is currently appointed as a this thing. ठीक है?
This is also important. Director General of Forest. So all the and Director General of Forest and Special Secretary. ठीक है. ये when it comes to forest or forest management, and this is the highest senior most post under the forest officer is concerned. I mean forest the Ministry of Forest and concerned. So basically IFOS, Indian Forest Services Officer, it is one of the all India services. There are three all India services in the in India. First IAS, then IPS, then IFOS, Indian Forest Services. ठीक है. There are three all India services. There are three all India services. Indian IAS, IPS, and IFOS. So that person is belongs to IFOS. ठीक है. IAS, IPS, and IFOS. These are three all India services. uh, this can be ignored because it is a reappointment. So it is not newly appointed. Vasudevan is MD and CEO of Equita Small Finance Bank. He was reappointed. So you can ignore such kind of news. This is also not much required. SSB additional charge. Okay, but you must know the DG of ITBP, that is Indo-Tibetan Police Force. This is the paramilitary force. We have around 4 to 5 paramilitary forces in uh, in India, and so these are all the paramilitary forces are under Home Ministry. Okay, Home Ministry, but Air Force, then your um, Army and Navy is under Ministry of Defense, and these paramilitary forces are under Home Ministry. ठीक है. ITBP, सशस्त्र सीमा बल, then your Assam Rifles, then CRPF, Central Regional Police Force, then CISF, Central Industrial Police Force, Security Forces, Central Industrial Security Forces. These are some paramilitary. ठीक है. And these are generally they come under Ministry of Home Affairs, and the Army, Navy, and Air Force comes under Ministry of Defense. ठीक है. This is okay. This is important information, but there are less chances of asking uh, question on this. But what kind of question can be asked from this is UN Conference on Disarmament in Geneva. So what is the probable question in here is UN Conference of Disarmament, where it is headquartered. So UN Conference on Disarmament. So UN Conference on Disarmament. So headquarter is headquarter is Polaris State Nations. ठीक है. Polaris, Polaris
Destinations. It was established in 1984. Hmm? And Secretary General Secretary General is Tatiana Volo वाया तातियाना बोलो वाया ठीक है. Hmm? So this is in Geneva. Okay, Geneva, Switzerland. So headquarter is Geneva, Switzerland. Secretary General is Tatiana. ठीक है. So you can expect a basic question on this news, right? Next is so this is also important question. Yes, uh, Patnia takes charge of Chief of ICG, Indian Coast Guard. So this can be directly one-liner question. तो यहाँ पे हेडक्वार्टर दिया है. हेडक्वार्टर का है न्यू दिल्ली और 4 कमांड है. नॉर्थ वेस्ट एट गांधीनगर. कमांडर वहाँ पे मुंबई में है और ठीक है. तो वो जो कमांड दैट इज ओके, वो आपको पता नहीं होगा तो चलेगा. आपको क्या चाहिए, ये इन्फॉर्मेशन आपको हेडक्वार्टर कहाँ पे है ये जरूरी है. और अभी उनका नाम क्या है, अब चीफ का नाम क्या है ये आपको पता होना जरूरी है. CAPF, or what is full form of CAPF? Yes, Ajit Doval is our Ajit Doval. ठीक है. Yes, Ajit Doval ने Ajit Doval DOBAL is our National Security Advisor. Very good. Okay. This is also important news. Vinay Kumar Tripathi is new chairman and CEO of Railway Board. ठीक है. Last year they basically changed the structure of railway management. So now Railway Board uh, ठीक है. सो अब वो उनको नया नाम दिया है. पहले अलग नाम था, अब ये नया नाम है रेलवे बोर्ड. ठीक है. बलदेव प्रकाश named as MD and CEO of J&K Bank. So what is important from exam point of view here is you must know the headquarter of Jammu and Kashmir Bank and its tagline. ठीक है. J&K Bank, Jammu and Kashmir Bank. Of course, it is not scheduled commercial bank. ठीक है. It is owned by J&K government. It was established in 1983, sorry, 1938, and headquarter is Srinagar. Founder who was Maharaja Hari Singh was founder, and headquarter is Srinagar. ठीक है. Next, so you can this can be the direct question. Baldev Prakash is the MD and CEO.
So you can ignore this question. Okay, Vistara airline, important airline of the world. So Vinod Khanna is can be this can be direct question. So Vistara airline. Basically, what type of question can be on what kind of information you must know from this is okay. Where it is the headquarter. So Vistara Airlines is it was started in 2013. Headquarter is Gurugram. ठीक है. This is very important. Alka Mittal, first woman head of ONGC. ठीक है. ONGC. ONGC is one of the most important public sector undertakings, and it is a Maharatna company. And ONGC is Maharatna company, and Alka Mittal became first person, first female to hold the position of chairman of this bank, this company. It is a public sector undertaking. It is she is chairman and MD. CMD, headquarter New Delhi. Headquarter is New Delhi, and it was formed in 1956. ठीक है. You can ignore this question. This news Ajay Kumar Chaudhary and Deepak Kumar as new executive directors because two reasons. Firstly, it is RBI's internal appointment, okay, and they do not hold important as important portfolio as deputy governor or other thing. Okay, so and there are multiple appointments as the same position. So there are less chances that this type of question can be asked. You can also ignore this US India Business Council. Okay, you must take it. What you can know is you should know this first one liner. Okay, so one liner question can be formed. This is also important. Director General of National Mission for Clean Ganga. A national mission for Clean Ganga is a flagship program of PMO. Okay, that is Prime Minister Office. National Mission for Clean Ganga (NMCG). Okay, it started in 2011. It started in 2011 NMCG. National Mission on Clean Ganga. National Mission for Clean Ganga.
just a minute, in 2011. यार 8 बजे का क्लास है और आप 8:35 वगैरह बाहर आ रहे हो, ठीक है। National Mission for Clean Ganga started in 2011. What is the objective? Is to rejuvenate Ganga mission and reduce the pollution in the streams of Ganga. Okay, that is the objective. Okay. Hmm. So this is important. Zhang Ming as a Secretary General of SCO. SCO stands for Shanghai Cooperation Organization. ठीक है, Shanghai Cooperation Organization. It is formal. It is informal bloc by dominated by China, and India is a member. Basically, it is a Chinese initiative for Chinese initiative in order to it is basically to provide a loan and to provide basically cooperation in the field of economic development or other okay, other aspect. It's basically it started in 2001. 2001 it started. There are 8 members. Who are they? China, India, Kazakhstan. So China, India, Pakistan, and 5 Central Asian countries like Kazakhstan, Kyrgyzstan, Russia, okay, Russia, Kazakhstan. So, what type of question can be asked is they can ask you the recognize the member of this organization. Kyrgyzstan, ठीक है, Tajikistan and Uzbekistan. They are members headquartered in, though it is named it names as a Shanghai Cooperation Organization. It is headquartered in uh, Beijing, China. Okay. And his Secretary General, as newly appointed, is Zhang Ming. Okay. Zhang Ming. Okay. यहाँ पे दिया है हेडक्वार्टर सीईओ 8 मेंबर है, 2001 में वो शुरू हुआ था, ठीक है। This is also important. Bank news. Urjit Patel, who was former governor of RBI, appointed as vice president of AIAB. AIAB stands for Asian Infrastructure Investment Bank. ठीक है, AIAB, Asian Infrastructure Investment Bank. It is headquartered in mostly Philippines. Sorry, again it is headquartered in Beijing. AIAB, AIIB, Asian Asian Infrastructure Investment Bank, headquarter Beijing. ठीक है,
This bank aims to improve the socio-economic condition of Asia. Okay. It was established in 2016. 105 countries are members. So you do not need to remember this, but what is important? Urjit Patel is now vice president. Is VP. Okay. So who is head? Who is president? Jean Likin. Jean Likin is president. Jean Likin is president of AIIB. ठीक है. यहाँ पे दिया है. This is also not much important. IBBI, because it is an extension, not an appointment. This is okay. I was explaining this. I told you last week कि in last lecture कि chief economist Geeta Gopinath, ठीक है, who was IMF's chief economist and who was due to retire in last month. So now the appointed Pierre Oliver, ठीक है, Pierre Oliver as a chief economist by IMF. IMF stands for International Monetary Fund. ठीक है, IMF International Monetary Fund. It was established in 1946. Sorry, 1945. 1945. Headquarter Washington DC. International Monetary Fund, and current chairman is or MD managing director is Kristalina Georgieva. Kristalina Georgieva. Okay. And now Geeta Gopinath now have been promoted as the first deputy managing director. Okay, who was chief economist and now promoted as a first deputy managing director. Now Geeta Gopinath. Okay, so this is again very important question from our exam point of view. And chief economist Pierre Oliver. Okay, that is given in notes. Okay. Next, Akhiril Smilov. I have told you that in case of appointment, newly appointed head of a country is also important. So, what type of question can be asked here? Either this can be direct question: who is new prime minister of Kazakhstan? Ali Khan Smilov. ठीक है. So, what type of additional information you must be knowing about Kazakhstanis?
Capital Nur Sultan. Nur Sultan. Official language is Kazakh. And currency is tenge. Currency tenge. Yeah. And uh, president. President is Kasim Tokayev. Kasim Tokayev. And PM is given in news, that is Alihan Smilov. ठीक है. Next information is official language is Kazakh. Right. And of course, Russian is also accepted. Then, okay. So, this is important. Central accounts. Okay, now it is okay. Now awards. So in awards, what type of question can be asked is uh, award and field. So which award is given for which field? Okay. Then award and winner or awardee. Okay, or awardees. So there are two type of question, and so particular award. So for example, Nanpit Award is given in the field of literature. Okay, and if or so Ballon d'Or is the award given in the field of football, and 2021 award was given to Lionel Messi, for example. Okay, so this type of question can be asked. Generally, bank. I mean, in my observation, IBPS or banking examination does not ask about such type of question that HDFC Bank won CII DX award for most innovative best practices. Okay, so they are important, but award means म्हणजे पारितोषिक पुरस्कार. Yes. Okay, and they have generally the person or very important award is asked generally. CII DX award for most innovative best practices. This becomes very difficult difficult to remember, right?
This is important. Viral Desai bagged Global Environment and Climate Action Citizen Award. Okay. So he is industrialist and green man. So you can be asked this type of question also. Who is known as green man? Okay. Okay. Beta Alia Bhatt India's 2021. So this can be ignored. Again, no, not much important from exam point of view. This is important. Sahitya Academy Award. So basically, Sahitya Academy Award is given by uh, uh, the government of India. It is given by government of India in the field of literature, and it is highest award for the literature from government of India. Okay. So generally, all the languages that are mentioned in 8th schedule of the Constitution are given in the are given Sahitya Academy Award for particular book. ठीक है. सो यू मस्ट नो कि कौन सी लैंग्वेज में कौन सा मिला है. अगर आप इफ यू आर प्रिपेयरिंग फॉर आरआरबी दैट इज रीजनल रूरल बैंक सो यू कैन एक्सपेक्ट such question like in Marathi who of the following got Sahitya Academy Award. ठीक है. तो ये इम्पोर्टेंट है. दानिश सिद्दीकी गॉट पोस्टह्यूमसली मुंबई प्रेस क्लब अवार्ड. ये यहाँ पे डायरेक्टली क्वेश्चन नहीं बन सकता है, लेकिन ये एक फोटो जर्नलिस्ट है दानिश सिद्दीकी भारत के. ये इनको पुलित्जर प्राइज मिला था. ठीक है. तो ये पुलित्जर प्राइज जीतने वाले पहले भारतीय पत्रकार थे, और इनकी डेथ हो गई थी तालिबान ने जो अटैक किया था अफगानिस्तान पे, उसके उसका कवरेज करते हुए इनकी डेथ हो गई थी. तो और आपको क्या पूछा जाएगा कि ये किस कंपनी के लिए काम करते थे या फिर किस प्रेस चैनल के लिए काम करते थे. तो वो रॉयटर्स ये प्रेस चैनल है उसके लिए वो काम करते थे. ठीक है. रॉयटर के लिए वो काम करते थे. ये इम्पोर्टेंट है क्योंकि ये फर्स्ट एवर गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड है इन न्यूमरोलॉजी. जो संख्या शास्त्र है उसमें पहला गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड किया गया है, और वो एक भारत की व्यक्ति है जिसे हमें वो पता होना चाहिए. फॉर अबाउट एंशियंट साइंस टू अराउंड 6000 पार्टिसिपेंट्स एंथुजियास्टिक ऑफ न्यूमरोलॉजी. ठीक है. उन्होंने 6000 लोगों को ये जो न्यूमरोलॉजी का जो एक शास्त्र है एंशियंट शास्त्र वो पढ़ाया था एक साथ. तो वो एक गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड हो गया था. ठीक है. So this is also not much important. UI path automation excellence award वगैरह ये बहुत ही मतलब ज्यादा इतने इम्पोर्टेंट नहीं है वो, तो पूछने के चांसेस बहुत कम है. ठीक है. Is it clear? My voice is clear or it is breaking? Okay. Yes. Next question. Third National Water Award for 2020. Okay. Okay, this can be ignored. I mean, you must read, but I'm just taking news which are very important from exam point of view.
तो ये 2020 का अवार्ड है, तो जनरली पूछेंगे नहीं, लेकिन अभी सिलेक्शन किया है इसके लिए, वो अभी न्यूज़ में है। आपको जनरली 2021 और 2022 के ही अवार्ड पूछे जाएंगे। सो ये इम्पोर्टेंट है, गोल्डन ग्लोब अवार्ड 2022 अनाउंस्ड। ये है हॉलीवुड प्रेस, हॉलीवुड प्रेस से दिया जाता है कैलिफोर्निया में फॉर द फर्स्ट टाइम। ठीक है, तो आपको मैं ये एक होमवर्क है कि आपको ये जो गोल्डन ग्लोब अवार्ड है, ये किसके फील्ड के लिए दिए जाते हैं। ठीक है, तो जनरली गोल्डन ग्लोब ये मतलब आर्ट लिटरेचर, नॉट लिटरेचर नहीं, मतलब आर्ट और पिक्चर के लिए दिए जाते हैं। गोल्डन ग्लोब ये 2022 के जो थे वो 79th थे एक्चुअली। और जो सबसे इम्पोर्टेंट अवार्ड है वो बेस्ट फिल्म का। ये आपको डायरेक्टली पूछेंगे कि बेस्ट फिल्म का किसको अवार्ड मिला था। और अभी मार्च में ऑस्कर होंगे, तो ऑस्कर के बारे में भी बेस्ट फिल्म, बेस्ट एक्टर, बेस्ट एक्ट्रेस और बेस्ट डायरेक्टर, ये चार आपको पता होना चाहिए। ठीक है, द पावर ऑफ द डॉग, ये बेस्ट फिल्म का अवार्ड मिला था। ऐसे ही आपको ऑस्कर के भी करने हैं। बेस्ट एक्टर विल स्मिथ। बेस्ट एक्ट्रेस निकोल किडमन। ठीक है, उसके बाद हर्षाली मल्होत्रा अवॉर्डेड 12th भारत रत्न डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर अवार्ड। ओके, तो ये जो अवार्ड है डॉक्टर भारत रत्न बाबा साहेब अम्बेडकर अवार्ड, ये किनसे दिया जाता है, हु गिव्स दिस अवार्ड, ये आपको पूछा जाएगा। ठीक है, ठीक है, तो ये जो अवार्ड है ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से दिया जाता है, डॉक्टर अम्बेडकर नेशनल अवार्ड। ठीक है, डॉक्टर अम्बेडकर नेशनल अवार्ड। और इसे फॉर नेशनल अवार्ड फॉर सोशल अंडरस्टैंडिंग एंड अपलिफ्टिंग ऑफ वीकर सेक्शंस भी कहा जाता है। ओके, ठीक है, तो ये 1993 से इसका ये चालू हुआ था।
ठीक है, महाराष्ट्र गवर्नमेंट से ये दिया जाता है। नेक्स्ट, हाँ, this can be question global private bank award, HDFC बैंक named as best private bank in India। तो आपको ये डायरेक्ट सवाल आ सकता है। आपको पता क्या होना चाहिए, HDFC बैंक का हेडक्वार्टर कौन है, अभी उसके हेड कौन है। तो ये आपके होमवर्क में मैं ऐड करता हूँ कि HDFC बैंक के हेडक्वार्टर कहाँ पे है, हेडक्वार्टर और उसके हेड कौन है, ये आपको होमवर्क है। ओके, यस यस, गोल्डन ग्लोब और हॉलीवुड। वैसे ही आपको नेशनल में जो नेशनल अवार्ड दिए जाते हैं और फिल्म फेयर अवार्ड दिए जाते हैं। फिल्म फेयर तो आप नहीं किया तो भी चलेगा, लेकिन जो नेशनल अवार्ड है वो आपको करने हैं। ठीक है, receives knighthood, okay, can you know this? Okay, okay, this is important. Smoothie Sumit Bhale won medal at International Folk Art Festival. So she's from Lavani. ठीक है, so this can be direct question. ठीक है, I'm not. I will just check out the name. So name is Sumit Bhale won folk art. ठीक है, इंटरनेशनल folk art festival in Dubai. Gold medal है। ठीक है, artist Sumit Bhale. So this can be question. Yes, Shashidan Jagdishan. Okay, very good. Then next can be, okay, this is also not ठीक है, okay, banking. So Indus Ind Bank launched green fixed deposits. ठीक है, so basically green fixed deposit are generally fixed deposit which are basically will be utilized for financing green projects or environment friendly projects. ठीक है, they are green deposits. ठीक है, and so for incentives they are given some additional interest. ठीक है, so to they are supporting sustainable development goals. ठीक है, so green deposit. So what type of question can be asked, which bank launched green fixed deposit? ठीक है, this is the basic question. And what additional information that you must be acquired again? ठीक है, Indus Ind Bank.
IndusInd Bank. This is a private bank, non-scheduled, founded in 1994, headquarter Mumbai, and uh, current MD and CEO or MD and CEO is Sumant Katpalia. Sumant Katpalia. Okay, so this is the question. This can be the question and basic information and green fixed deposits. So direct question can be asked. Oh, okay. So SBI acquired 9.95% stake in Gift IFS clearing corp. Okay, so this is just read it, but not much important from exam point of view. Domestic systematically importing insurance for taken. Okay, so government generally nominate a company or a organization for systemically important company or domestic systemically important organization. ठीक है. So basically their existence and their functioning is important from uh, domestic economy point of view, and their success or their administration is looked after, and they have special attention of government of India. Okay. So other than this, there is not much information. But what you additional information you can always gain is you should find out the headquarter and head of these three insurance companies. So again, your headquarter homework is headquarter and head of LIC, GIC, and New India Insurance. Right. हेलो. आवाज नहीं आती माझा. Am I- मेरा आवाज आ रहा है कि नहीं आ रहा है अभी? Am I audible? Okay, okay. Because there is no problem from my end. Okay, yes, okay, no problem. Okay, so this is just additional information you can say. Okay. SBI retains SBI, ICICI Bank, and HDFC Bank as domestic systemically important banks. Okay. So as insurance companies, they are also bank also. Okay. So again, SBI, ICICI Bank, and HDFC Bank headquarter and important person. Okay. So SBI headquarter, ICICI Bank headquarter and head, and what was next last one is uh, HDFC. ठीक है, HDFC. ठीक है. Yes, domestic systemically important bank for this year. ठीक है. Okay, this RBI approved, RBI in a year RBI gives this uh, approval for many banks or companies, so it is not much important from exam point of view.
Okay, so this is important. Airtel Payment Bank's yes, scheduled bank status. In next lecture, I will be when I will be explaining about the banking structure of India. I will also talk about the scheduled and non-scheduled bank. I will just mention them now. Basically, commercial banks are divided into two categories: scheduled banks and non-scheduled banks. Scheduled bank are the banks which are mentioned in the second schedule of RBI Act of 1934. Okay, second schedule of RBI Act of 1934, and non-scheduled banks are mentioned in the Banking Regulation Act of 1949. Okay, if a particular bank gets scheduled status, okay, so it has to follow all the guidelines and all the regulations that are given by RBI. Okay. At the same time, as a scheduled bank, it gets more authority, it gets more recognition from customer point of view. Okay, so it gets more business also because it is a scheduled bank. So RBI believes that it can be add into its schedule, so it added. So it is also the important from banking point of view, but at the same time they have additional regulation from RBI. Okay, so this is important. They can be asked direct question. This can be direct question or additional information. What you must be searching is head of and headquarter and MD and CEO of Airtel Payment Bank. Okay, so I will tell them. I will tell. So Airtel Payment Bank. So it was started in 2017. Headquarter New Delhi, and Anubrata Biswas, MD and CEO is MD and CEO is Anubrat Biswas. Is MD and CEO of Airtel Payment Bank. ठीक है. Owner is Bharti Airtel and Kotak Mahindra. ठीक है. Kotak Mahindra and Bharti Airtel. ठीक है. Okay. This is additional. RBI issued framework for online digital payment. So just read this news. Released a framework for small value offline transaction in the digital mode. Offline payment may be made by using any channel or investment like card, wallet, mobile devices, but they shall be made in proximity or in face-to-face mode only. ठीक है. Online. ठीक है. An offline payment refers to a transaction which does not require internet or telecom connectivity to take effect. For example, card payment, ठीक है, और मोबाइल टू मोबाइल पेमेंट, ठीक है. So this is also important. RBI cancelled authorization certificate of Muthoot Vehicle Finance Eco India. Okay, so you can ignore this. Why? But just read out why cancelled certificate of authorization of two payment. ठीक है. Citing non-compliance with regulatory requirements. ठीक है. So you can see that if RBI regulation is not followed or not complied, then it can cancel your authorization or it can even cancel your license. ठीक है. अब दिस कैन बी द क्वेश्चन. बहने छोड़ दो, सॉरी, बहाने छोड़ दो टैक्स बचाओ कैंपेन. So direct question can be is which insurance company or which of the following company launched this campaign. So SBI General Insurance Company launched this campaign, बहाने छोड़ दो टैक्स बचाओ. So your additional direct question is who, so or otherwise
what type of question can be asked as in order to create awareness about uh, the insurance, which SBI General Insurance launched which of the following which of the following campaign or which of the following product. Okay. So additional information you must be adding in your notes. That is again your homework. SBI General Insurance. You must be knowing its head and headquarter. Okay, that is your homework. Okay. So, okay. Now, before moving towards our statistical part, static part, what type of question can be asked on books and authors? There is only one type of question can be asked in books and author book. They will give you the book and they will ask you the name of the author or uh, name of the author, or otherwise they can mix the book and award. That is, what they will ask this, for example, 2021 Booker Prize is given to which book? Okay, so they will not ask the author, but they will ask the book. So, to 2021 Booker Prize was given to The Dreamer. The book name of the book was The Dreamer. Okay, so this type of question can be there. Okay, maybe very difficult book and award, but and other things is award and also name of the author. So okay, so this can be just go through this once you get this magazine. Only this type of question can be asked. They will not ask about the publication or um, uh, who और जे अनावरण करतात ना जो बुक को पब्लिश करते हैं, ठीक है, पब्लिशर नहीं पूछेंगे, जो जिनके हाथों बुक लॉन्च हुआ है उनके नाम भी नहीं पूछेंगे, आपको सिर्फ वो क्या पूछेंगे कि ऑथर कौन है और बुक का नाम कौन है, ठीक है। और जनरली देखिए कि ये भी द ग्लिम्पसेस ऑफ पायनियर्स लाइफ जर्नी, सो ये जो है ऑटोबायोग्राफी, सो ऐसे ही नेम के ऊपर ऑटो नाम दिया है बुक का, उनका नाम ही दिया है बुक का खुद का, तो जनरली बहुत चांसेस कम है कि इस प्रकार के सवाल आपको वो पूछे जाए, ठीक है। हाँ, व्हाट टाइप ऑफ क्वेश्चन कैन बी आस्क्ड इज इनडोमिटेबल, इनडोमिटेबल यानी कोई डोमिनेंट नहीं कर सकता, ठीक है। इनडोमिटेबल वर्किंग वुमेन्स नोट्स ऑन लाइफ वर्क एंड लीडरशिप, ठीक है। सो दिस कैन बी द क्वेश्चन, who wrote the book? Arundhati Bhattacharya was former SBI chairman. She was the first person who was selected as a probationary officer in SBI and became chairperson of SBI, ठीक है। So she has written the book. So this can be the question, indomitable working women's note on life, work and leadership, ठीक है। Another type of question can be asked as, so Ratan Tata's biography, Ratan N. Tata, the authorized biography. This is a authorized biography, ठीक है। बट अभी तक ये पब्लिश नहीं हुआ है, तो उसके बारे में जब पब्लिश होगा नवंबर में, तब उसके बारे में आपको पता होना चाहिए कि इसने क्या लिखा है, ठीक है। अनदर बायोग्राफी ऑफ मनोज वाजपेयी, ठीक है। मनोज वाजपेयी इसने लिखा है पीयूष पांडे, ठीक है। तो ये भी आपको पूछा जाएगा कि who is the author of the book called मनोज वाजपेयी कुछ पानी की जिद, और फिर और they can ask you just the autobiography of मनोज वाजपेयी, ठीक है। So this can be the question, ठीक है।
So go through award section and you will see the uh, mm, just it is a factual information, right? So you can expect a question, but this apart from this there cannot be any question on book or author. Okay, in from that section. Okay, type of question I'm saying. Okay. Hmm? So let us stop here for today for current affairs, and we will now move towards our static awareness part. Okay, this is first part. You can write it down. I want you to write it down. Okay, so take down your notebook and pen and write it down. Or if you can take a screenshot, you can always take a screenshot. Hmm? So military exercises. So what type of question can be asked on military exercises is I guess I have mentioned in first or second lecture, but you must be knowing that. Uh, for example, let us take by example desert night. It is an example. It is a military exercise between which country? Okay. So or I will either they will ask both the countries or they will ask India participates in a desert night military exercise with which of the following country. So you should be knowing the correct name of that country. So here 24 odd exercises are there. Okay, this can be from current affair also, hmm, and static also. Okay, and static GK also. जनरली नाम जो है वो चेंज होता नहीं है, तो इसकी वजह से हम लोग उसको स्टैटिक जीके भी कह सकते हैं। और वो करंट अफेयर में हाल ही में हुए हुए पिछले 6 महीने में हुए हुए करंट जो मिलिट्री एक्सरसाइज है उसके बारे में पूछते हैं, तो उसको हम लोग करंट अफेयर का क्वेश्चन भी मान सकते हैं। तो देखते हैं गरुड़ शक्ति। गरुड़ शक्ति ये जो एक्सरसाइज है ये इंडिया और इंडोनेशिया के बीच में होता है। और एक चीज, अगर आप करंट अफेयर्स में आप कवर कर रहे हो तो आपको आ जाए कि यही एग्जांपल लेते हैं कि डेजर्ट नाइट का एक मिलिट्री एक्सरसाइज हुआ था इंडिया और फ्रांस के बीच में। तो आपका एक क्या होगा, एडिशनल काम क्या होगा, आपको उसी नोट्स में आपके मैगजीन में ही यहाँ पे फ्रांस का कैपिटल लिखना है, फ्रांस का करेंसी लिखना है, और फ्रांस के जो प्राइम मिनिस्टर है या फिर प्रेसिडेंट है या फिर जो भी है वहाँ के हेड जो है उनके बारे में लिखना है। ठीक है, ऐसे इस चीज को क्या कहेंगे, इस चीज से होगा क्या, अगर कोई भी क्वेश्चन आ गया और आपको क्या पूछेंगे, कैपिटल तो पूछेंगे, करेंसी पूछेंगे, ये पूछेंगे या फिर ये पूछेंगे, तो आपको ये सब एडिशनल इंफॉर्मेशन आप क्वेश्चन एक मतलब सिर्फ एक न्यूज है, उस एक न्यूज से आप ये 3 प्रकार की एडिशनल इंफॉर्मेशन आप निकाल सकते हो। ठीक है, तो ये आपका एडिशनल काम होगा, आपका ये होमवर्क होगा। ठीक है, नेक्स्ट मैत्री, ये हर हर चीज के लिए आपको करना है। इंडोनेशिया के बारे में भी करना है, इंडिया और थाईलैंड के आपको ये भी करना है। ठीक है, ठीक है। देन श्याम भारत, SIYAM, श्याम भारत, ये भी इंडिया थाईलैंड के बीच में ये होता है मिलिट्री एक्सरसाइज। उसके बाद सीट मैक्स, SITMEX, तो ये इंडिया, सिंगापुर और थाईलैंड, इन तीनों के बीच में है। सिंगापुर, इंडिया, थाईलैंड मिलिट्री एक्सरसाइज, सिंगापुर, इंडिया, थाईलैंड मिलिट्री एक्सरसाइज, सीट मैक्स। ठीक है, इंडिया, EU, NAVFOR। ठीक है, सो ये है इंडिया और यूरोपियन यूनियन का नेवी का फोर्स, नेवी का एक्सरसाइज। ये आपको चांसेस कम है कि किस फील्ड का है, यानी नेवी का है, आर्मी का है, एयरफोर्स का है, ऐसे नहीं पूछेंगे, लेकिन आपको एडिशनली आपको पता रहना, पता चाहिए तो आप ये रख सकते हैं कि इंडिया, EU, नेवी फोर्सेस, नेवल फोर्सेस। ठीक है, इंडिया एंड यूरोपियन यूनियन। उसके बाद इंद्र, ये इंडिया और रशिया के बीच का मिलिट्री एक्सरसाइज है। आज के जो यूक्रेन और रशिया वॉर चल रहा है उसके कंटेक्स्ट में ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इंडिया फॉर
IN फॉर इंडिया एंड DRA फॉर रशिया, ठीक है, IND फॉर इंडिया एंड RA फॉर रशिया, ठीक है. What is the capital of Russia and what is the currency of Russia and what is the who is the head of Russia, ठीक है, you should be knowing. Capital of Russia is Moscow, currency of Russia is ruble and head is Vladimir Putin. Okay, then shield exercise again India, Sri Lanka and Maldives. Shield exercise India, Sri Lanka and Maldives. Then samudra shakti exercise. So ठीक है, so there are more chances of asking this type of question in the military exercise point because they have very peculiar name, ठीक है, गरुड़ शक्ति, मैत्री, ठीक है. There are less chances of asking this type of question, sit max, INEUNAV for FOR or Indra, ठीक है, because it has initial of those countries. But Siam Bharat, this can be asked. Shield exercise can be asked. Samudra Shakti, that is between India and Indonesia, also can be asked. Desert Eagle, where may bigger chances of asking this type of question. Desert flag, ठीक है, but generally question from this section can be regarding of military exercise between two countries only, ठीक है, but they will not ask such question कि India, UAE and four other countries. So they will not ask what are the four other countries वगैरह वो नहीं पूछेंगे, ठीक है. ये देखिए, ये एक बहुत इंपॉर्टेंट है, जैद तलवार, इंडिया यूएई, इंडिया यूएई. कोकण, ये मिलिट्री नेवल एक्सरसाइज है, अगेन इंडिया यूके. इंद्रधनुष्य, अगेन इंडिया यूके. अजय वॉरियर, अगेन इंडिया यूके. जहर अल बहर, इंडिया कतार, ठीक है. कोई कोई लोग ऐसे मतलब एडिशनल इंफॉर्मेशन के नाम पे वो कहाँ पे हुआ था, वो कौन सा था, मतलब ये पहला था, दूसरा था, 20वां था, 30वां था, लेकिन ये बहुत चांसेस बहुत ही कम है कि इस प्रकार से वो सवाल पूछे जाए. अगर नेवल फोर्सेस का एक्सरसाइज है तो देर आर वेरी लेस चांसेस कि वो भारत से कौन सा नेवी पार्टिसिपेट किया था ये पूछेंगे, क्योंकि भारत साल भर में कम से कम 10-15 नेवल एक्सरसाइज करता है, कम से कम, ठीक है. और उस 10-15 नेवल एक्सरसाइज में कम से कम 15-20-25 जो वॉरशिप है या फिर जो हमारे जो नेवल है, ठीक है, वो पार्टिसिपेट करते हैं. तो ये बहुत ही डिफिकल्ट होगा कि कौन से एक्सरसाइज में कौन सा जो शिप है वो पार्टिसिपेट किया था, तो वो सवाल ऐसे नहीं पूछेंगे, ठीक है. एक बात आप समझ लीजिए कि 40 में से 3 से 4 सवाल छोड़ के 35 तो 35 to 36 क्वेश्चंस विल बी कि आपने अगर बहुत ज्यादा एफर्ट्स किए हैं, अच्छे से पढ़ाई की है, अच्छे से रिवीजन किया है, तो आपको आएंगे ही आएंगे, ठीक है. ऐसे सवाल मतलब उनको भी वो जो भी क्वेश्चन फॉर्म करता है, कोई भी एग्जाम हो, लोगों को आए ऐसे ही वो सवाल पूछेंगे, ठीक है. ऐसे नहीं हो कि बहुत ज्यादा डिफिकल्ट पूछ लिया. कंसिडरिंग द डिफिकल्टी, आई मीन कंसिडरिंग द एग्जाम और पोस्ट, डिफिकल्टी लेवल कैन बी वैरिड, बट ऐसे सवाल बहुत ही कम होंगे कि वो किसी को नहीं आएंगे, ठीक है. काजिन, अगेन इंडिया एंड कजाकिस्तान, मलाबार, ये इंपॉर्टेंट है आज के कंटेक्स्ट में, इंडिया रशिया वॉर के इंडेक्स में. इंडिया, यूएसए, जापान एंड ऑस्ट्रेलिया. देन शेयर डेस्टिनी, और ये भी इंपॉर्टेंट है आज के कंटेक्स्ट में. ये मलाबार को काउंटर करने के लिए चीन ने शुरू किया है. चीन, मंगोलिया, पाकिस्तान एंड थाईलैंड, ठीक है. सिम्बेक्स, सिंगापुर इंडिया. बोल्ड कुरुक्षेत्र, ये भी एक इंपॉर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, सिंगापुर एंड इंडिया. ऑसिंडेक्स, ये भी मतलब डायरेक्टली सवाल है ये आपको, ठीक है, तो चांसेस कम है. इंडिया यूएसए 3 प्रकार के एक्सरसाइज करता है, टोटल 4, लेकिन सिर्फ इंडिया यूएसए की अगर हम लोग बात करें तो 3, टाइगर ट्रायम्फ, वज्र प्रहार एंड होप इंडिया, ठीक है. मित्र शक्ति,
मित्र शक्ति, इंडिया एंड श्रीलंका। उसके बाद स्लीनेक्स, इंडिया एंड श्रीलंका, ठीक है। देन शक्ति बंदी, इंडिया एंड फ्रांस, वरुण, इंडिया एंड फ्रांस, गरुड़, इंडिया एंड फ्रांस, एंड Desert Net, India and France. So Garud Shakti, do not confuse with Garud Shakti and Desert Eagle or Desert Flag. ठीक है, they are different. Okay. So आप ये बार एक 3-4 बार आप पढ़ोगे, ये शीट आपको मतलब मैं सर को भेजने वाला हूँ. So sir will send it to you after our 5 lectures. So ये 4-5 बार पढ़ने के बाद आपको याद हो जाएंगे. 1 से 2 सवाल, मतलब जो भी आप एग्जाम दे रहे हो उसमें से आपको एक सवाल कम से कम इसमें से आएगा ही आएगा. ठीक है. Yes, this is static awareness. LIC head NR Kumar. Okay, very good. ठीक है. Important. Next in line is important tribes from India. ठीक है, important tribes from India. किस प्रकार का क्वेश्चन पूछा गया? ट्राइब और कौन से स्टेट से वो बिलोंग करती है, इसी प्रकार से क्वेश्चन आपको पूछे जाएंगे. ठीक है. तो यहाँ पे ये है आदि और आफातानी ट्राइब जो है वो अरुणाचल प्रदेश से है. ठीक है. और उसी के साथ आपको ऐड क्या करना है, अरुणाचल प्रदेश का कैपिटल वो आपको पता होगा, अरुणाचल प्रदेश के सीएम और अरुणाचल प्रदेश के गवर्नर. ये हर एक स्टेट को आपको, यहाँ पे जो स्टेट में मेंशन करूंगा उस स्टेट के आपको सीएम, कैपिटल और गवर्नर पता होने चाहिए. आपके जो स्टैटिक अवेयरनेस के नोट्स है उसमें वो मेंशन किए गए हैं, लेकिन आप खुद से निकालोगे वहाँ पे थोड़ा अपडेट हो जाएगा, क्योंकि गवर्नर बदलते रहते हैं, सीएम बदलते रहते हैं, तो वहाँ पे थोड़ा अपडेट हो जाएगा. चांसेस कम है, लेकिन 3-4 मतलब स्पेशली गवर्नर अब बदल सकते हैं. ठीक है. अंगामी नागालैंड, देन बंडगास तमिलनाडु. ठीक है. बैगा मध्य प्रदेश एंड राजस्थान, भूतिया जम्मू एंड कश्मीर, भूतिया सिक्किम. ये इसमें कंफ्यूजन होता है, भूतिया एंड भूतिया, तो ये आप याद रखना है एक बार. बोडो आसाम, चेंचू आंध्र प्रदेश. ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है. छुतिया आसाम, ये भी एक इंपॉर्टेंट है. गारो मेघालय, खासी मेघालय, जयंतिया मेघालय. ठीक है. अब अगर आप मेघालय का मैप देखोगे तो ये ऐसा है, यहाँ पे बांग्लादेश है, तो ये गारो, खासी, जयंतिया ऐसे हिल है, और वो हिल के पास जो ट्राइबल रहते हैं उनको उसके ही नाम दिए हैं. ठीक है. इरुलास तमिलनाडु, ये इंपॉर्टेंट है. कनीस केरला, ये इंपॉर्टेंट है. खामटी अरुणाचल प्रदेश. जनरली जो ट्राइबल बेल्ट है भारत का वो नॉर्थ ईस्ट इंडिया, साउथ इंडिया, यहाँ पे ही ज्यादा है. ठीक है. महाराष्ट्र में भी ट्राइब है, लेकिन वो बहुत फेमस है, गोंड है, आदिवासी है, काटकरी है, ऐसा है. ठीक है. लेकिन जनरली सवाल अगर हम लोग देखें तो इसी रीजन में से आपको सवाल पूछेंगे. करबी आसाम, और जो भी आपके करंट अफेयर के न्यूज में आता है वो आपको तो करना ही है. कोटा तमिलनाडु एंड कर्नाटका. ठीक है. तमिलनाडु ये इंपॉर्टेंट है. कर्नाटका कुकी. ठीक है. कुकी मणिपुर. देन मीना राजस्थान, दारोस झारखंड, तागिन अरुणाचल प्रदेश, लिंबू सिक्किम, तोड़ा तमिलनाडु, पावी मिजोरम एंड झेलियांग नागालैंड. ये कुछ 25 ट्राइब है, और भी ज्यादा है. आपके मतलब जो टेस्ट सीरीज होंगे, ठीक है, वहां पे आपका कवर हो जाएगा.
करंट अफेयर्स के जो न्यूज़ आपके आएंगे, नेशनल न्यूज़ वगैरह, उसमें ये आपके अलग से ड्राइव कवर हो जाएंगे। नहीं तो ये कम से कम 25 आपको पता होने चाहिए। ठीक है, ओके, इट्स ऑलमोस्ट 9:35 नाउ, वी विल स्टॉप हियर फॉर टुडे। यस, they do not ask tribe means Adivasi. This is not their religion. ठीक है, do not confuse Adivasi or tribes means they are living in that particular area, particular forest for almost since thousands of years. ठीक है, they have their distinct culture, they have their distinct language, and they are generally by and large dependent on the surrounding forest or surrounding area for their livelihood. दे जनरली दे आर फॉरेस्ट ड्वेलर्स। वो फॉरेस्ट में जाके जो फल है या फिर जो लकड़ी वगैरह है उसको काट के अपना गुजारा करते हैं। और उसमें बहुत से एग्रीकल्चरिस्ट है, उसमें से कोई जो ट्राइब है उसमें से वो हैंडीक्राफ्ट में स्पेशलिस्ट है। ठीक है, ओके। मैगजीन आपको लास्ट लेक्चर के बाद मिलेगा। ठीक है, ठीक है, सो वी विल स्टॉप हियर फॉर टुडे। ओके, गुड नाइट एंड थैंक यू।